Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our legal news for CLAT for module number 3, and this is January 2019. I'm sure you must have watched earlier 2 videos of January. In fact, we have given legal news for some around, you can say, September, October, November, December. All these months we have given you legal news. Make sure that you continue taking this legal news. Legal news पढ़ने से बड़ा फायदा होता है. At least you'll get to know important issues which are happening in our country. Primarily, we are looking from various angles. We are looking from governance angle. We are looking from the impact on the society. We are looking from an angle of the principle itself कि भैया ये principle सही है अपने आप में, ये मुद्दा सही है कि नहीं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं. आज के issues है, फटाफट बात करते हैं हम. ठीक है, जनवरी महीने के ये इशू है. ठीक है, दिस विल बी अ लास्ट मॉड्यूल फॉर जनवरी मंथ. ओके, देन वी विल स्टार्ट विद द फेब्रुअरी मॉड्यूल, एंड आई एम श्योर यू विल रियली लव टू लर्न with ProTalent. Okay, let me talk about the issue number 11, which talks about INB, that is, you can say, Information and Broadcasting Ministry drops paid news regulation in a draft bill. Okay, so I'm sure you understand that there is a news item. Okay, so the news has to be independent, but in today's time it becomes a paid news. People pay money and then their news items are published. Okay, so after a year-long deliberation, Ministry of Information and Broadcasting has decided to drop the regulation against the paid news in newspaper, magazine from the proposed Press and Registration of Books and Periodical, that is PRBP bill. At present, there is no law to tackle the paid news. Paid news का कोई लॉ नहीं है. ठीक है, किस चीज को पेड न्यूज माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा उसका अलग पर्सपेक्टिव चलता है, पर कोई अलग से लॉ नहीं है. सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है दैट देयर इज अ स्पेशल लॉ which governs printing of newspaper, which is called Press Registration of Books and Periodicals. Okay, so ये एक अलग से एक्ट चलता है. So a parliamentary panel in 2015 has asked the ministry to expeditiously formulate appropriate policy to make paid news as a punishable electoral malpractice. Okay, so अखबारों में paid news देना which is electoral malpractice, and it is also empowering press council to adjudicate the complaints of this paid news. Election Commission of India has certain rules with regard to paid news in place, under which you can say it is disqualified Madhya Pradesh Minister Mr. Narottam Mishra for 3 years in June 2017. Now, what is the rationale for this? You can say PRBP Act. PRBP primarily deals with, you can say, a kind of communication which is right to freedom of speech, पर उस freedom of speech को कैसे curtail करना वो PRBP में आता है. So this is not a right legislation for paid news, as the earlier act was PRB Act. It was only concerned with टाइटल वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, सर्कुलेशन वेरिफिकेशन डिटेल्स, उसके बारे में बात होता था. ठीक है, एंड नाउ देयर इज अ सेपरेट डीलिंग. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, द पेड न्यूज pertains to content and issue that should be dealt through an amendment in Press Council Act, okay, which is concerned with the standards of newspaper and news agencies is in India, and therefore PRBP उसके अंदर में पेड न्यूज नहीं आएगा. ओके, सो एग्जाम में सवाल बन सकता है कि पेड न्यूज विल बी पार्ट ऑफ पीआरबीपी और नॉट. देन यू से नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ PRBP. Okay, so what is this? You can say new legislation of PRB. Okay, the new legislation was established in June 2017. That ministry decided to scrap 150-year-old archaic Press and Registration of Books Act 1865. काफी पुराना था. ठीक है, and it drafted a fresh bill to regulate newspaper and publication as well as their
रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पनिशमेंट क्या था इसमें? इट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पब्लिकेशन वाज फाउंड टू हैव इंडल्ज or is continuing in indulging in a publishing of paid news, the press registrar general could suspend the publication for a period of 45 days after holding an inquiry under Press Council Act of 1978. Okay, and what is the provision to the punishment? ठीक है, publisher will be given an opportunity to present his case, ठीक है, as the provision mentioned, but still there may be a kind of punishment. So this is how the PRB Act is available. Next is called electoral bond scheme. So I'm sure you've heard that in last year government of India has introduced a system of electoral bond. Thereby all political parties will get their funding. For example, let's say you or I would like to give money to one of the political party or donate money. There is a way available that is called electoral bond. Okay, now this electoral bond was intended to clean the entire political system, but it is not actually doing. Many experts are saying that there are a lot of loopholes. Which are the loopholes being suggested by them? They suggest that it is a major issue. There is no ceiling, especially on the party expenditure. Okay, party के expenditure में कोई ceiling नहीं है per person. That is per you can say member who is standing for the election, उसके election expenditure में limitation है, पार्टी के एक्सपेंडिचर में कोई लिमिटेशन नहीं है. ओके, देन देयर इज एन इश्यू ऑफ ब्लैक मनी. फर्दर देयर इज नो श्योरिटी दैट द मनी दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द स्कीम इज नॉट अ ब्लैक मनी because there is a secrecy of donor. Still there is a secrecy of donor. There is a issue of foreign influence. फॉरेन से भी पैसा इंडिया में आएगा और वो इंडिया में से वो पैसा जाएगा वापस ये इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर. एंड इट इज टू ओपेक. इन द प्रेजेंट फॉर्म द स्कीम परमिट्स नॉट ओनली इंडिविजुअल्स but body corporates but also an artificial judicial person to purchase bond issued by SBI. I'm sure you know that electoral bond is issued by SBI only. Okay, so in the denomination of 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore during a specified period of the year. Okay, but there is no specificity about who is the person. At the same time, removal of existing ceiling, okay, is a big issue. The scheme removes an existing condition that had prohibited companies from donating anything more than 7.5% of their average net profit. अब ये उन्होंने निकाल दिया है. So now that means even if they are loss making, they will be in a position to put a lot of money. Okay, so this is once again a kind of corruption is getting created. Okay, removal of the safeguard is another issue. ठीक है, the requirement that a corporation ought to have in existence at least 3 years before it could make donation is also removed. Okay, and therefore shell companies, फर्जीवाड़ा वाली कंपनी बहुत गलत गलत तरीके से पैसे लगाकर इसमें डालेंगे and it is violation of fundamental rights. So हम चाहते थे करप्शन निपटे. ठीक है, ये सरकार हमारे लिए करप्शन हटाए बट इन एन इंटरेस्टिंग मैनर. ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट इज विजिबल कि हमने कोई मजेदार से इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए बट इन रियलिटी इलेक्टोरल बॉन्ड इज हेल्पिंग the political parties. Okay, so this is a loophole and which is getting into trouble. Coming to number 13, Rajasthan government removes educational criteria for local bodies election. If you remember, Rajasthan, Punjab, they introduced a concept of minimum education for local bodies election. Okay, now this time it is Rajasthan government has decided to scrap minimum education requirement. Okay, मेरे हिसाब से there cannot be or there should not be any minimum education requirement for contesting any kind of election. Now why do I say so? Because education of a particular, you can say, time period does not ensure that person becomes a particular quality kind of person. Okay, whatever we expect from our leaders may not have been educated from a very good colleges. Okay, that's not really necessary. Okay, है ना. तो अगर उनको
एक तरीके से सोसाइटी के बारे में समझ है, पब्लिक को उनके ऊपर विश्वास है, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो मेरे हिसाब से राजस्थान ने जो किया वो सही किया, ओके। सो द पॉजिटिव इंपैक्ट इज it will restore right to contest election, okay. So this is a progressive move and it will restore right to contest. Obviously it is in theory because there are a lot of other people who cannot contest because of social constraint, but still it is a large section of population in the state where literacy rate according to 2011 census was just 52% for women and 79% for the man. So there are large number of people who are not literate, okay. जो अभी इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, भारत में अभी इलेक्शन आने वाला है, उस इलेक्शन में दिस इज अवर यू कैन से 17th लोकसभा इलेक्शन, जो पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें काफी मजेदार चीजें हुई थी। आवर फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हैड अ बिग प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि देश में सब लोगों का नाम इकट्ठा करना, चलो वो तो कोई ना कोई तरीके से पॉसिबल है। जो दूसरा प्रॉब्लम था साइकोलॉजिकली, वो ये था कि बहुत सारे लोग इलिटरेट थे, उनको किस तरीके से एजुकेट करना और कैसे उनको उनके जो मतलब जिन बंदों को वो वोट देना चाहते हैं उन बंदों को, है ना, वो वोट देंगे, हाँ, उस तरीके की इमेज, उस तरीके की कम्युनिकेशन क्रिएट करना, वो उन्होंने किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इनोवेशन दैट इज गिविंग अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। उन्होंने सिंबल दिया और अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग बैलेट होते थे। आप मानो कैंडिडेट ए बी सी में से कैंडिडेट बी को अगर आप वोट देना चाहते हो तो आप वो सिक्का मार के वो बी वाले बैलेट में आप कागज डालोगे। सो दे हैव डन लॉट ऑफ थिंग, in fact they have put in lot of efforts through this theaters, movie theater में they actually ran a full method of how to go for election, कैसे वोटिंग देना उसका पूरा प्रोसेस उन्होंने समझाया था। सो इट हैज टर्न आउट टू बी वंडरफुल थिंग। पूरे वर्ल्ड में लोगों ने बोला दैट इलेक्शन जो इंडिया में हो रहा है विच कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है, विच इज एक तरीके का मजाक है, ऐसा मानते थे। बट उसके बाद भारत में दूर दूर से लोग इलेक्शन को स्टडी करने आते हैं। इतने बड़े देश में फ्री और फेयर वे में इलेक्शन होना वो एक बहुत बड़ी बात है, ओके। अगला पॉइंट आता है इसमें, इट इज रिस्टोरेशन of states responsibility. It is the state's responsibility to allow people to go for, you can say, contesting for any kind of election. It is restoration for the purpose of PRI. What is PRI? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी ये ओपननेस होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। इट विल गिव लॉट ऑफ चॉइसेस एंड इट विल प्रोटेक्ट the marginal people, okay. So final analysis says that Rajasthan government has done well to ensure that right to represent and choose one's representative is no longer circumscribed, मतलब उसको काट के नहीं रखा गया है। In a liberal democracy such openness has to be there, okay. अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 14, suggestion for committee to amend MCC. Now what is MCC? It is called Model Code of Conduct. Now what is Model Code of Conduct? It's a part of Representation of People's Act. उसके अंदर जिस दिन इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। इसके लिए स्पेशल कमिटी बनाई गई थी, उमेश सिन्हा कमिटी, ठीक है। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कुछ कुछ सजेशन दिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल लीडर है, जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, ठीक है, उन सबका एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक उनका बिहेवियर कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि वो सरकार की कोई चीजों को मिसयूज ना करे, सरकार की जो मशीनरी है उसको मिसयूज करके अपने फेवर में चीजें न कर सके। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ओके। सो व्हाट आर द वेरियस सजेशंस provided by this Umesh Sinha committee, ठीक है। He also suggested releasing of manifesto. So he said that political parties should release their manifesto at least 72 hours before the voting ends in the first phase of polls, okay. So currently the entire provision is very silent. कभी कभार ये जो मैनिफेस्टो है, ठीक है, वो कैसे रिलीज करते हैं, फर्स्ट फेज
का इलेक्शन हो जाने देते। अभी जैसे आपको पता होगा 7 फेज का इलेक्शन है भारत में, है ना। तो ये 7 फेजेस के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें मानो पहले फेज में तो उन्होंने नहीं किया, सेकंड या थर्ड फेज में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो 48 आवर्स पहले जो प्रमोशन बंद हो जाता है उसी के बाद ये लोग कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं, तो इनडायरेक्टली उसका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। दी अनदर इश्यू, द पैनल आल्सो सजेस्टेड दैट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन साइलेंस, ओके, दैट इज टू बी एक्सटेंडेड टू कवर प्रिंट एंड सोशल मीडिया, इंटरनेट, केबल चैनल, ऑनलाइन वर्जन, ठीक है। जो एक 48 आवर्स के पहले इलेक्शन साइलेंस होना चाहिए, कोई भी तरीके का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, वहां पे सोशल मीडिया, इंटरनेट, केबल टीवी, है ना, प्रिंट मीडिया भर देते हैं, ठीक है, तो उसको रोक देना चाहिए। एंड देयर हैज टू बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया अबाउट कंट्रोलिंग सच काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इज बेसिकली बीइंग provided. I hope that is very clear. Okay, आगे बढ़ते हैं. Issue concerning CBI is working. This is, you can say, coming into a lot of debate. ठीक है. There were 2 days after CBI Director Alok Verma was reinstated by Supreme Court. The high-powered selection committee headed by Prime Minister removed him, ठीक है, from the post. So नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्होंने खुद ही इस भाई साहब को हटा दिया. He is the first CBI chief to be ousted from the post. ये बड़ा पंगा हो गया, ठीक है. Supreme Court had earlier held that any transfer of the CBI or chief could not be effected without the prior consent of high-powered selection committee comprising of these people, that is Prime Minister, leader of opposition party and CJI. But Supreme Court said that issue of Verma's divestment remains open to be decided by the selection committee. Okay, so this is non-fulfillment of natural justice. There are a lot of problems. Natural justice तो हुआ ही नहीं, possible political interference हो गया, and then there is an issue of reputation of CBI. This is, you can say, coming into picture. Okay, चलिए great, आगे बढ़ते हैं. The issue of legal status for SSC. SSC is a staff selection commission called Karmachari Chayan Ayog. Okay, so there is a parliamentary standing committee has recommended that center accord statutory status to SSC, which is the largest recruitment agencies in the country. There is UPSC, which is basically a constitutional status, while SSC has no such status. Okay, याद रखिएगा ये, ठीक है. So there are various issues here, like there are a lot of other bodies like UPSC, State Public Service Commission. They enjoy legal and constitutional status, while SSC doesn't enjoy that. ठीक है. There is a lot of workload which is coming. So there has been phenomenal increase in the workload of SSC. ठीक है, from around 9.94 lakh students in 2008-9 to over 2 crore in 16-17. Such a huge workload to be, you can say, connected through a proper body. And there is an issue of autonomy. There is SSC which has to depend entirely on the government for all its needs. So with no or little autonomy, such kind of SSC is required to be independent so that वो अपना काम सही तरीके से कर सके. And there are a lot of suggestions being provided by, you can say, various committees. So thereby it is a need of the hour to keep SSC as a separate statutory body. Coming to next part, ठीक है, which is called proposal for an independent regulator for spot exchanges. I'm sure you know there is something called spot exchanges. What is spot exchanges? ठीक है, there are stock exchanges. स्टॉक मार्केट होता है जहां पे शेयरों की खरीदारी बिकवाली होती है. स्पॉट एक्सचेंज होता है जहां पे ऑन द स्पॉट चीजों की खरीदारी बिकवाली होती है, जहां पे पेमेंट बाद में नहीं देना है, ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है. सो पहले स्पॉट एक्सचेंजेस होते थे, अब वो स्पॉट एक्सचेंजेस जो है उसका जो रेगुलेटर है आज की तारीख में, दैट इज सेबी. ओके, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी वाज द फर्स्ट चॉइस of Ramesh Chand committee, but capital market regulator said that it may not be able to take up the task, and thereby there is a need to have a separate regulator for spot exchanges. I'm sure you know regulator. Yes, there are a lot of regulators. For example, बैंकों का रेगुलेटर कौन है?
आरबीआई। ओके, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? आईआरडीएआई। okay, same is the case, for example, let's say CBSE is a body regulator and performing body for 10th standard students and 12th standard students education के नजरिए से। UGC is a regulator for universities। okay, so ये तरीके के regulators होते हैं। okay, now here the purpose of the new regulator is primarily to create more transparency, create more standardization and primarily focus attention on the working of such big body। okay, आगे बढ़ते हैं and we talk about the last issue for us, which is called Supreme Court on the Lokpal Act। Recently Supreme Court has asked 8-member search committee under Lokpal Act to recommend panel of names before the end of February 2019। This shortlist has to be sent to the selection committee headed by Prime Minister Lokpal ko lagao। This is the requirement। ठीक है, it has been 5 years since Lokpal Act 2013 received President's assent on January 1, 2014। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट बोलती थी that we would like to make it करप्शन फ्री और करप्शन फ्री में लोकपाल होना चाहिए, but this is the same government which has not implemented this लोकपाल। ठीक है, a search committee was formed only on September 27 after Common Cause, which was an NGO which filed a contempt petition against government over the delay in constituting the authority despite a Supreme Court verdict in April 2017। okay, so this is Lokpal and Lokayuktas Act 2013 provides establishing of a body to be headed by a chairperson who is or has been a Chief Justice of India or who has been judge of Supreme Court or an eminent person who fulfills eligibility criteria has been specified। Lokpal is at the center level, Lokayukt is at the state level। okay, so this is what Lokpal Lokayukt के बारे में एक बेसिक जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है that February 2019 के पहले सर्च कमिटी को एक नाम रिकमेंड करना है। चलिए, great। So with this, I'm closing this particular module. January module for this legal news is now over. We will now move towards February part। Make sure that you take all this from protalentdigital.com, जहां से आपको इसके बारे में perfect learning मिलेगी। Okay, चलिए, great। Thank you very much and all the best।